अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। इसके हवाले से कतर के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे और काफ़ी चीज़ों पे बातचीत होती रही है, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप कतर ने ऑर्गेनाइज कर भी लिया, वर्ल्ड कप हो भी गया, शराब पे पाबंदी भी लग गई, कतर ने अपने शरिया लॉ भी फीफा पे इम्पोज किए वर्ल्ड कप के ऊपर और कोई उसको रोक नहीं सका। अब अगला वर्ल्ड कप अमेरिका में है। अमेरिका के लोग ख़ास तौर पे जो लेफ्ट के और वो जो होते हैं, उन्होंने काफ़ी शोर शराबा किया कतर के हवाले से। ज़ाहिर कतर का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। कतर का जो भोंपू है अल जज़ीरा, वो पूरी दुनिया में भारत के बारे में और दूसरे देशों के बारे में बहुत ज़्यादा बकवासियात करता है, लेकिन कतर के बारे में वो कभी नहीं बोलेगा। आफ्टर ऑल कतर में ह्यूमन राइट्स तो है नहीं ना। सऊदी अरब भी एक शरिया कंट्री है, लेकिन सऊदी अरब में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सऊदी अरब अब एक मॉडल स्टेट बन गया है, लेकिन सऊदी अरब में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं और ज़्यादा स्पीडी चेंजेस इसलिए भी नहीं हो पा रही कि आफ्टर ऑल सऊदी अरब इज़ ए कैपिटल ऑफ इस्लाम। वहीं से इस्लाम शुरू हुआ था। इस्लाम की जो दो सैक्रेड सबसे पवित्र स्थान हैं, जो वो मक्का और मदीना, वो भी सऊदी अरब में है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर सऊदी अरब टू एक्ट लाइक दुबई, कि वो दुबई की तरह हर चीज़ खुला ढुल्ला नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल ये है कि सऊदी अरब बहुत तेज़ी से चेंजेस ला रहा है और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन कतर में हम देख रहे हैं कि इतना पॉजिटिव चेंजेस की कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। और लेकिन इस बारे में अमेरिका का कुछ कहना बनता नहीं है कि अमेरिका का अपना रिकॉर्ड जो है ना, वो बहुत ही भयानक है। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पे कोई बोलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आप अमेरिका से बाहर देखें तो इन्होंने अबू गरीब जेल इराक में कैदियों के साथ क्या सलूक किया था, ये सबको पता है। कुत्ते छोड़े थे और क्या क्या नहीं हो रहा था वहाँ पे, नंगा करके इनके साथ जो सेक्सुअल टॉर्चर होता था, जो इनके साथ ह्यूमिलिएशन होता था। ठीक है, आप अगर आपके जंगी कैदी हैं तो जंगी कैदियों का कोई जिनीवा वार क्रिमिनल लॉज भी कुछ है ना, वार क्राइम के कुछ लॉज हैं, उसको सऊदी अरब ने कभी अमेरिका ने कभी फॉलो नहीं किया। ग्वांतानामो बे में हमने देखा टोटल वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब अमेरिका ग्वांतानामो बे के मामले पे हम कहते हैं कि उसको टेररिस्ट कहता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर टेररिस्ट नहीं थे। कितने लोग पाकिस्तान ने ऐसे ही पठानों को पकड़ पकड़ के दे दिया कि ये भी टेररिस्ट है, ये भी टेररिस्ट है। भाई अगर टेररिस्ट थे तो 80% ग्वांतानामो बे से छूट गए ना। क्यों छोड़े अमेरिका ने अगर वो टेररिस्ट थे तो? इसका मतलब बाद में उनके बारे में अमेरिका ने ये अपनी इंक्वायरी में देख लिया कि वो लोग टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन उस वक्त तो आपने इनके साथ गैर इंसानी सलूक किया ना। फिर इराक में क्या था? इराक में तो कोई टेररिज्म नहीं थी। सद्दाम हुसैन के इराक से कब दुनिया में टेररिज्म हुई है? कहीं पे भी टेररिज्म नहीं हुई। उसको अलकायदा से जोड़ दिया, जबकि अलकायदा का भी वहाँ पे कोई निशान नहीं मिला। बाद में इन्होंने आईएस इस्लामिक स्टेट जो वहाँ पे लीबिया, सीरिया और इराक में बनाई, वो बाद में थी। लेकिन इराक तो उन्होंने अबू गरीब जेल में जो वो लोग थे जो अमेरिकन इन्वेजन के खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहे थे। तो ये तो हक है ना कि भाई आज यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन वाले रशिया से लड़ रहे हैं, तो आपके अबू गरीब जेल में उनको भर देंगे क्योंकि वो रशिया से लड़ रहे हैं। तो यही चीज़ इराक में अमेरिका ने की। अमेरिका का अपना रिकॉर्ड क्या है ये जॉर्ज गैलेवे बताएंगे। मैं जॉर्ज गैलेवे का सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूँ। मैं 90s से जॉर्ज गैलेवे को वॉच कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान की आईएसआई के डिक्टेशन पे चीज़ें करते रहे हैं। ख़ास तौर पे कश्मीर के मामले पे ये बहुत ही ज़्यादा यूएन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये फीफा वर्ल्ड कप कतर और अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ कह रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। I just saw a black woman commentator on Britain's state mouthpiece, the BBC,
a woman by the name of Alex Scott, MBE, a former gifted woman footballer with the Arsenal Football Club, at the end of a tirade about human rights abuses in Qatar, saying, we hope at the next World Cup we won't have to have these conversations again. No, Alex, you definitely will not have these conversations again. You will not, 4 years hence, if God spares us all, be heard talking about the 25% of the world's prisoners that are held in America's prisons, even though the World Cup will be in America. We will not be told that the biggest portion of them, Alex, are people who look like you, whose skin color is the same as yours. You will not be talking about the chain gangs of black prisoners in the United States of America. You will not be talking about the gunning down of partygoers at gay clubs. You will not be talking about the massacres in the malls all over the United States of America. You will definitely not be talking about the 50 countries that America has invaded or overturned in the years since the end of the Second World War. I promise you, you will not be talking about any of that. You will not be talking about the extreme injustices of the US injustice system. You won't say a word about it. Qatar is nothing to do with me. I'm banned from Qatar. I'm not here shilling for Qatar. I have zero relations with Qatar. But my goodness, are they being traduced in this World Cup? Because they don't allow people to stagger around drunk in the streets of Qatar. A fact which was known by FIFA and the world that is represented at FIFA when they granted the World Cup to Qatar in the first place. Gay sex is not legal in Qatar, as it isn't in any Muslim country in the world, as it isn't in any but one African country in the world, as it isn't particularly popular in Poland, where 300 mayors have just declared their towns to be LGBTQ plus free, and yet we're shipping money and weapons to Poland. We're citing American nuclear weapons in Poland, the better with which to threaten Russia. This hypocrisy is utterly sick. It means that the World Cup should not be in any Muslim country. Why don't you come out and say that? It means that the World Cup cannot be in any African country. It means that the World Cup's not that popular in Alabama and in other states of the United States that only until very recently gay relations were illegal. The hypocrisy over the rainbow bans is beginning to beggar belief. Every single football broadcast on ITV and BBC in Britain begins with and is punctuated at half time with attacks on the organizers, Qatar. I even had someone say to me today how dreadful it is that some games start at 10 o'clock in the morning. I tell you what, why don't we hold the World Cup every 4 years in Greenwich? Then we can watch it at Greenwich Mean Time, and it can be not the World Cup but the Anglo-sphere. अजीज दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया पे पिछले 30-35 साल से सिंगल हैंडेडली रूल किया है और पिछले तकरीबन 100 साल से अमेरिका दुनिया की चीज़ों को डिक्टेट करता रहा है. अमेरिका इज़ नॉट प्रेसिडेंट, कांग्रेस या सेनेट का रूल. अमेरिका कॉरपोरेट सेक्टर रूल करता है और इस तरह दुनिया भर में अमेरिका की पॉलिसीज़ जो इम्पोज की जाती हैं बाय फोर्स, वो कॉरपोरेट सेक्टर की पॉलिसीज़ होती हैं. अब जैसा कि हिस्ट्री गवाह है कि कोई भी सुपर पावर परमानेंट नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका क्रम्बलिंग होती है, वो गिरती है, वो ख़त्म भी हो जाती है. हिस्ट्री भरी पड़ी है. अगर मुसलमानों की ही देख लें आप,
तो ओटोमन एम्पायर, उमैयद एम्पायर, अब्बासिड एम्पायर, मुगल एम्पायर, कई एम्पायर्स आई। गजनवियों ने रूल किया बड़े इलाके पे, तैमूर ने किया बड़े इलाके पे, कई जगहों पे मुसलमानों की सरकार रही, स्पेन में रही, सब कुछ रही, ख़त्म। फिर आप हिस्ट्री में और पीछे चले जाएं तो साइरस द ग्रेट था, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, बेबीलोन की एम्पायर्स थी, रोमन एम्पायर थी, कितनी थी, सब खत्म हुई ना। फिर ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर 300 साल तक पूरी दुनिया में कंट्रोल करके रखा हुआ था। 300-400 साल इन्होंने पूरी दुनिया को कब्जे करके रखा था। स्पेनिश एम्पायर थी, पूरा साउथ अमेरिका लेके बैठा था। बाकी आधी दुनिया फ्रांस के पास थी, आधी दुनिया इंग्लैंड के पास थी, सब खत्म हुई ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और फ्रांस की खाली नुमाइशी एक रह गई कि हाँ जी ये पावर हैं, सुपर पावर हैं, बड़ी पावर हैं, लेकिन वो सब लूट मार का पैसा जो इंग्लैंड और फ्रांस ने जमा किया था पूरी दुनिया से, उस पर अब तक चल रही हैं। अब वो मेजर सुपर पावर नहीं है। मतलब फ्रांस इंग्लैंड मिला के भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी इकोनॉमी भी एक आर्टिफिशियल उस पर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इनका कर्जा है, और उस पे ये सब चीजें इनकी चल रही हैं। खत्म हुआ ना। अब अमेरिका का भी क्रम्बलिंग शुरू हो गया है। अमेरिका में भी चीजें तेजी से बदल रही हैं। मैं नहीं कहता कि अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस कल खत्म हो जाएगी, कई साल लगेंगे, जाहिर है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स अमेरिका में, दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका है। अभी इन्होंने एक लेटेस्ट B-21 बॉम्बर बनाया है, वो अनमैन्ड है, उसमें कोई आदमी नहीं होगा, ड्रोन कह लें एक तरह का, लेकिन बाकायदा एक फाइटर जेट है। तब्दीली अमेरिका में भी, मतलब मिलिट्री वाइज अमेरिका तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक वाइज, इनोवेशन वाइज के मोबाइल फ़ोन तो ये तो वो तो सारी अमेरिका से हो रही है, लेकिन तब्दीली आ रही है। चाइना और इंडिया दो पैरेलल सुपर पावर्स एमर्ज हो रही हैं, और अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो अगले 15-20 सालों में चाइना और इंडिया विल बी ग्रेट सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, और अमेरिका को शायद वो ओवरकम कर लें 15-20-25 साल में, और अमेरिका इनसे छोटी पावर बन जाए। क्योंकि अमेरिका का जो सोशल ढांचा है वो अभी आपने देखा, जॉर्ज गैलेवे ने जो बताया, वहाँ पे भी वाइट सुपरमैसिस्ट है ना, मेजॉरिटी में तो नहीं है। वहाँ पे ओरिजिनल जो अमेरिकन इनहेबिटेंट्स हैं, जिनको रेड इंडियन और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, वो हैं। ब्लैक्स हैं जो कि अफ्रीका के जो लेबर लाए गए थे, स्लेव लाए गए थे, वो बहुत बड़ी तादाद है। फिर हिस्पानिक ओरिजिन के बहुत सारे लोग हैं, और यह है कि फिर जो नई माइग्रेशन है उसमें भी आपके इंडियन और पाकिस्तानी और इस तरह चाइनीज़ और बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस हैं। तो अगर यही हालात रहे और इमिग्रेशन और बर्थ रेट का हिसाब किताब रहा तो आगे चल के बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो जाएगी नॉन वाइट पीपल की। तो सिचुएशन ये है कि आप देख लें, इस वीडियो में ये बता रहे हैं हमारे भाई कि किस तरह यूरोप और अमेरिका की पावर्स कम हो रही हैं, और उसको वो इंडिया के हवाले से कुछ हवाला जात आपके सामने रख रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। Daughters, please clap. Economic power, 4 largest economies in the world. China in PPP, purchasing power parity, USA. Number 3, India. Number 4, Japan. Where is Europe? Missing in action. Let's take a look at the new World Wealth Report 2020. India's privately held wealth is $8.2 trillion, the 6th largest in the world. And according to this report, by 2020, which is 8 years from now, the average Indian will have twice as much private wealth as the average German or the average British citizen. What do we spend it on? Eating better, looking better, studying better, communicating better, etc., etc. When I say looking better, 650,000, for those who are not familiar with India, 650,000 towns and villages in India.
and 15 million beauty parlors. So you can imagine how much money we spend on looking better, communicating better, 1.6 billion mobile connections for a 1.3 billion population, and 1 billion smartphones. And you are all familiar with what this means, traveling better, etc. 2015 International Yoga Resolution, co-sponsored, introduced by India, co-sponsored by 177 of the 193 members of the UN, the largest in the history of the UN. And ma'am, the French ambassador sitting there, I was in the General Assembly, says, my country supports yoga because India is the spiritual mother of all mankind. What a beautiful thing to come from the French. In Yemen, when there was a civil war, we were asked to evacuate our nationals. All other countries were told, you can't come in to evacuate your nationals, only the Indian military. We trust them. I went to Paris the same year. We brought out 20,000 people from 40 countries. The immigration officer at Charles de Gaulle Airport sees my passport and says, you're an ambassador of India. I said, yes, I am. He said, well, you brought out 500 Frenchmen from Yemen. I said, if we made a mistake, we'll take them back. He says, no, sir. He gets up and salutes me and says, thank you, India. This is the new India that we are talking about. 1969, I don't know if any of you remembers, you're not old enough, but we were invited to the founding conference of the Organization of Islamic Cooperation. When we got there, we were not allowed into the hall. We had been invited. We were booted out. We were thrown out. Water and electricity in our hotel was switched off. India did not have the strength to retaliate, ladies and gentlemen. 50th founding anniversary of the OIC last year. Who do you think is the guest of honor? Your country, India. So the military rebalancing today, take a look at this. The most powerful militaries. None of these are my figures. These are all UN, various agency figures. Most powerful USA spend a lot of money. Second, Russia. Third, China. Fourth is India. Where is Europe? Still missing in action. Result of these tectonic changes, 15% of the world that ruled the other 85%, they don't know what is happening. The biggest disease in the developed world, ladies and gentlemen, is depression and loneliness. Britain even has a minister for loneliness. And they are training young people. They say they have 9 million lonely citizens. They are training people to be companions. I sent my photograph saying, these are all rich widows. I would love to be their companion. Then they responded to me, yes, we are lonely, but we are not that lonely. So we have depression, loneliness, while India is bubbling with self-confidence and energy. Thank you, we'll handle it ourselves. 2004 tsunami, Kashmir earthquake, Sikkim earthquake, Kedarnath floods, whatever. Not $1 we take from anybody now. We do it all ourselves. In fact, we help other countries in this. Just one humiliation. My colleagues, my friends from France, ladies and gentlemen, I don't think you know what hunger is. Ask me. 65, we fought a war. The rains didn't come. 66, the rains didn't come. Mrs. Gandhi, the then Prime Minister, went to the US to beg for food. New York Times wrote, new Indian leader comes begging. She came back and she said, never again will we beg. And we were told, don't eat on Mondays. I have slept hungry throughout 1966. I have slept hungry on Mondays. Ask me what hunger is. And your country, which said feed us, is today the second largest producer of food grains in the whole world. For too long have others written India's destiny. A country that forgets its past, ladies and gentlemen, has no future. We remember our past. We made mistakes, but never again. I have spoken to over 7 million kids in India, and the promise they make me that they will write India's destiny themselves, not allowing anyone else to write. I touch my ears. I ask God to forgive me. They make this commitment to India, and I make them a commitment. In a few years from now, I will leave my body, and I will have a simple memorial which the Indian military has built for me in Kargil, the area that I love. It simply states, scattered in the dust, silent I remain. When India's bugle calls, I will rise again.